Switching from English to Hindi, so for everybody's convenience. So exports are extremely important for growth. I mean, I was reading somewhere, and some analysis by economists, 50% of India's growth last year in the GDP was actually attributed to exports. 50%, मतलब incremental growth था पिछले साल, जो अच्छी growth थी पिछले साल 7-7.5% जो भी आया था, 50% was actually as a result of higher exports. So exports are very critical for a couple of things. A, they help grow. 2, employment बढ़ाते हैं. ठीक है ना? ज़्यादातर एक्सपोर्ट चीज़ के लिए होते हैं, कपड़े के होते हैं, शर्ट पैंट वगैरह के लिए होते हैं, लेदर आइटम्स के लिए होते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट. So actually they help exports a lot. They help employment a lot, which means livelihoods. A lot of 50% of exports are MSMEs. A lot of exports are services sector, which are actually labor intensive. So I think the labor intensity of our exports is very high. So easily I think exports have a direct connect with the goals of the government, which is employment, growth, etc. So that is one. 2, global dynamics in trade, and I think this PowerPoint will be circulated to all the media people after 4 o'clock, after the ministers. That's what I'll say, about till 4:45. There is a change in global trade dynamics. लोग हमारे बगल वाले बड़ा देश है, वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए भारत के लिए एक सुविधाजनक माहौल बन रहा है चारों तरफ. तो ये एक बात है. दूसरा, अगर हम देखें कई वर्षों से भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं किसी कारणवश लगभग 10-12 साल से 300 बिलियन के आसपास फंसे हुए थे. 300 बिलियन ±5-10%, मैक्सिमम 330. 1-2 साल पहले कोविड साल था 290, उसके पहले वाले साल में 313, उसके पहले वाले साल में 330, अभी तक सर्वाधिक 330 बिलियन रहा है. तो इसको देखते हुए अगर ये लगा कि जब तक हम ये एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाते ये देश की प्रगति नहीं होगी. सो देयर इज अ नीड टू एक्चुअली प्रोएक्टिवली डेवलप एक्सपोर्ट्स एज इन अ वेरी टारगेटेड फोकस्ड मैनर. जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमें ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री अमृत काल की बात करते हैं. सो यू आर लुकिंग एट 2047 में देश का क्या जीडीपी होगा? इट विल बी सर्टेनली मोर देन $30 ट्रिलियन, विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ आइदर यूएसए और चाइना एज ऑन डेट. आप कल्पना करिए देश कितनी बड़ी देश होगा. बहुत ही, मैंने हम कल्पना नहीं कर सकते. मैं ये कहूँगा वी ऑफिसर्स सिट टुगेदर एंड ट्राई टू विजुअलाइज $30 ट्रिलियन क्या होता है. उसकी जीरो स्किल लेते हैं बट उसके कल्पना नहीं कर सकते $30 ट्रिलियन आपको लाएगा क्या हाथ में. दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेगमेंट इन दैट. देन व्हाट वी लुक एट इट, व्हाट वी आल्सो सी इज पुराने ज़माने में, अब देश की जब आज़ादी मिला हम लोग क्या ज़्यादा बेचते थे दुनिया भर में? कपड़े तो बेचते ही थे, जूट, टी, कॉफ़ी, दीज आर आवर ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स. रबर. अगर आप देखेंगे नेचर द इकोनॉमी हैज चेंज. सर्विसेज थे ही नहीं 20 साल पहले, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो गया. $150 बिलियन सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स होते हैं. ये सब अगर देखते हुए अगर देखा जाए तो ये लगा कि नेक्स्ट वी शुड एक्चुअली लुक एट हाउ वी आर ऑर्गेनाइज्ड इंटरनली. बाहर कहानियाँ बताना आसान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. देखिए जब फौज जंग लड़ने जाती है ना, जब तक उसकी पूरी प्रशिक्षण नहीं होता, शिक्षित नहीं होता, उसके हाथ में औजार, बंदूक और कारतूस नहीं होते, वो जंग जीत नहीं सकते. Similarly, if you have to actually have a target and the target has to materialize on the ground in reality, you actually must have the instruments with which you can deliver the target. And what is the instrument that delivers the target? The government and its departments and its various wings, which will work with exporters, trading houses, companies, individuals, traders, missions abroad and push. फिर हमको ये लगा कि हम क्या करें जिससे कि हम शासन का जो ढांचा है इसको सुधार सकें, जिससे कि एक्सपोर्ट्स में और गति आए. और ये चीज़ बाहर बताने वाली कई बार बात होती नहीं है, बट जिस व्यापक तौर पे विभाग ने ये काम किया है, जिसकी झलक आप 4:45 बजे मंत्री जी के हाथ से देखेंगे तो लगेगा कि ये कोई मैंने इधर उधर एक कील ठोक के कोई पैच वर्क नहीं कर रहे हैं. ये एक मूलभूत परिवर्तन लाए हैं विभाग में. तो हमें विश्वास है कि इस मूलभूत परिवर्तन से जो हम पिछले साल गति लाए एक्सपोर्ट्स में, आने वाले सालों में भी बना रहेगा. सो व्हाट वी डू, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच वी सेड. यू सी वी शुड हैव अ कोहेरेंट ट्रेड प्रमोशन स्ट्रैटेजी. ट्रेड प्रमोशन आज तक इज अ बंच ऑफ स्कीम्स. रॉटेप लगा दिया, एमईएस लगा दिया, ईसीजीसी लगा दिया, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन. एक्सपोर्ट प्रमोशन इज इक्विवेलेंट टू स्कीम्स. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आप सब लोग ट्रेड के बीट पे हैं. एफटीपी मेंट schemes, chapter 1 so policy, chapter 8 so and so policy.
I mean, this is not a bunch of schemes. Foreign trade policy should be a vision. Similarly, we do a lot of negotiation. आपने देखा यूए के साथ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया. ये अलग बात है कि हमने बहुत जल्दी किया, बट पसीना छूट गया, आदत नहीं था. हम लोगों को अपने लाहे लाहे जैसे इन एसएमईज धीरे धीरे काम करके 8-10 साल में एक एग्रीमेंट करने का आदत था. Somebody once talked about bureaucratic tourism. Trade treaties meant a lot of tourism for our officers. So the idea was to actually move fast and conclude negotiations fast. But then do you have the capacity? एक बार ये क्रिटिसिज्म होता है, आप लोग भी कई लोगों ने लिखा है कि आप एफटीए कर देते हो लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है, तो हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. क्या उसके लिए हमारे अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए एनालिसिस की, वो हमारे पास है या नहीं है, ये था. तीसरा, हम एग्रीमेंट तो साइन कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उसका लाभ उठाते हैं? ये भी एक शिकायत रही है. इट इज़ कॉल्ड हाउ मच डू यू वर्क द एफटीए, हाउ मच डू यू यूटिलाइज द एफटीए. ये भी हमारी कुछ कमजोरियाँ रही हैं. फिर ये भी कहते हैं हम लोग सब चलते पुरजे हैं, आते हैं 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, निकल जाते हैं. परमानेंट टैलेंट का क्या है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज की क्या बात है. अब जो दूसरे देशों के साथ हम लोग इसी वाणिज्य विभाग जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट आउटसाइड ऑफ एमईए. दिस इज द डिपार्टमेंट विच हैज द लार्ज हाईएस्ट एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, विदेशों के साथ. 90% of the rest of the government is inward looking. उनके लिए इंडिया फर्स्ट. बट फॉर अस बाय नेचर ट्रेड मीन्स आउटसाइड इंडिया. तो हमारी हुकूमत जो है देश के जो बाउंड्रीज है इसके बाहर शुरू होती है, विच मीन्स वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इंटरफेसिंग. फिर सामने वाले को देखते हैं तो उनकी ताकत का एहसास हमें होता है कि भाई हाउ स्ट्रॉन्ग आर दे, हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर दे, and how can they actually do a better job, and what can we learn to be as good as them. So I think for that we needed to change our setup, build skills, make ourselves more agile, and simultaneously, एक ज़माने में था, if anybody goes back to 1940s or 30s or 50s, Japani mal meant bad stuff. I go to villages at least in the south, German silver meant aluminium. So we have a lot of poetry in Telugu, on German silver. Basically, इसने हमारा जो पीतल और इसके धंधों को खत्म कर दिया. Do you refer to Japani mal as low quality anymore? Never. So I think there's a need also to upscale the image of India, make brand India well known. So with these goals, we actually went into a long exercise, and some of our friends are there here from outside. We engaged consultants, but it was a largely in-house exercise. भाई वो लोग हमारे लिए जो हम उनके लिए चाहते थे जानकारी इकट्ठा करते थे, अधिकारी बैठते थे, and we went ahead and did this entire project. Next. And if you see it, we actually divided this department and looked at it from 9 areas. The first, ये पूरी जो हमारा काम था, इसका उद्देश्य क्या था कि हम लोग एक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए हमें किस प्रकार का विभाग चाहिए. That is the fundamental question. Everything has to be linked to an outcome. $2 ट्रिलियन करना है तो what are all the areas in which you have to be strong. आप देखेंगे तो एक ट्रेड पॉलिसी है जो 5 साल में एक बार आता है, but that is actually trying to convey that vision into a set of actionable points. That's what a trade policy is. Then there is trade negotiation. हम लोग WTO में बात करते हैं. We also talk bilaterally, FTAs, etc. Then there is trade promotion. This is a wing which is non-existent in India. अब दूसरे देशों में I think एक आध स्लाइड बाद आएगा, बहुत स्ट्रांगली ये लोग अपनी धंधों को बाहर पुश करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को. We were very weak. We needed to study that. Trade facilitation is traditionally what your DGFT is nowadays doing, which is trade regulation, and then helping infrastructure, a few schemes here and there. Trade remedies is your DGTR, जो anti-dumping वगैरह देखते हैं. Lastly, on छठा आइटम जो है स्टेट आउटरीच, राज्यों का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए. बिकॉज कल रात I will not preempt, but we are coming up with a new scheme which probably the minister will announce today evening, or it will be left to a future date. Idea is to help states to actually get into exports. अब भारत का मैप देखेंगे तो सारे कोस्टल स्टेट्स, दक्षिण के और पश्चिम के सारे एक्सपोर्ट्स वहीं से होते हैं. अब जब तक एक्सपोर्ट्स रीच इनटू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, they will not be touched by the progress that is happening in other parts. UP ho, Bihar ho, Jharkhand ho, even Madhya Pradesh now, they are not very great in exports, you see. So whereas you go to Kerala, उसका मुंह ही बाहर की तरह होता है, अंदर की तरफ तो देखते हैं वो पहाड़ से कट वैसे भी है. So they naturally have this inclination, So I think state outreach is basically to pull them into the export ecosystem. And then to support all this, there's a lot of stuff needed.
हमारे यहाँ DGCIs है, they produce data, but ये क्या आपका काम का डेटा है? I mean, they produce your monthly data. आप लोग सबसे headline news निकाल देते हैं, ट्रेड इतना बढ़ गया, एक्सपोर्ट इतना गिर गया, that's fine. But for an individual जो बिजनेस में है उसके लिए इसका क्या काम है? How useful is it for them? I think that's something we wanted to look at. So I think that's one area. Also we have to engage with a lot of people. How does this department engage? Ad hoc करता है, systematic. So और lastly हमारी क्या talent pool है? इसके basis पे we studied all these areas. Next, and then we went into the big recommendations that have come. And I think I will mention it now. The details will come in the ministers' meeting. So please see this as one continuous thing. I'm doing kind of the curtain raiser as they call it, to be embargoed till 5. First bada item is the country needs a dedicated trade promotion body. A dedicated. Ab Australia chale jaye, you have Australia. Canada has a trade commissioner. US Department of Commerce is nothing but a trade promotion body. UK में चले जाएंगे, you have Great Britain first. Okay, everybody has a trade promotion. Morocco, Japan, Germany, Singapore, सबके पास है. ये पता नहीं 70 साल हो गए आज़ादी के, हम लोगों ने खड़ा नहीं किया. After all, the job of the department is not to sign agreements but to push trade. So I think this is one big vacuum and I'll explain later. Second is brand India. प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भी बोलते हैं. I think promoting brand India is a very important thing. Third is how do you strengthen mission so that they engage more. पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कॉल तो दिया था कि मिशंस को आप लोग सब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में घुसिए, 3Ts जो बोलते हैं. क्वेश्चन है वो सबसे पहले चीख के मेरे पास आते यार तुमने काम तो थोप दिया, मेरे पास बंदे नहीं है, 1-2 बंदे दे दो. सो यू नीड टू स्ट्रेंथन द मिशंस टू इन्वॉल्व देम एक्टिवली इन ऑल दीज थिंग्स. सिमल्टेनियसली जब हम ये नेगोशिएशंस करते हैं, मैं बार बार FTAs बोलता रहा था, FTA 2.0. आई थिंक वी आर डिस्कसिंग न्यू थिंग्स. ट्रेड इज डज नॉट मीन गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स एनवायरनमेंट, it means labor, innovation, anti-corruption, investment. All these areas are there. Gender, MSME. So ये सब के लिए हमारे विभाग में कैपेबिलिटी चाहिए. नहीं तो हमारे में नहीं, दूसरे विभागों में कैपेबिलिटी चाहिए. So I think building up that. Lastly, 2-3 other things. This entire trade facilitation, जो GDFT schemes वगैरह चला था, इसको automate करके shrink that office. So in a way, that one of the big recommendations that comes out of this is DGFT को 2 टुकड़ों में तोड़ देना, और तोड़ दिया गया है. और आप लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा, but actually DGFT today is wearing 2 trophies. One is old DGFT and the other is the new DGFT, which is trade promotion. Yeah, actually an office order. I think we should circulate the office order, Abhishek. Sure. Not you, my Abhishek. Office order की कॉपी सबको दे देना चाहिए. पिछले वाले आज ही दे देंगे. अभी before you meet the minister हाथ में होगा. ये ऑर्डर 3-4 दिन पहले निकाल दिया. सो वी एक्चुअली हैव अ ट्रेड प्रमोशन बॉडी ऑलरेडी इन प्लेस. दिस इज वन. देन ये जो डेटा और एनालिटिक्स का जो सिस्टम है, इसको ओवरहॉल करने का. साथ में हमारी जो इंडियन ट्रेड सर्विस है, वो इस विभाग का बेसिक कोर है, जो एक्सपैंडेड. उनका काम ये नहीं रहना चाहिए कि पर्चा काटे और आपका एडवांस ऑथराइजेशन का ओके करें. दे हैव अ मच बिगर रोल टू प्ले ट्रेड प्रमोशन. एंड लार्जली स्टेट्स में बड़ा फुटप्रिंट डालना. So I think the trade promotion body will have a foreign leg and an Indian leg. I think that is the direction. Next. Now, so these are the recommendations that have come, which I now in a way have actually covered it when I was talking. So the trade promotion body will push trade promotion across the world, be it branding, be it financing, be it talking to missions, be it talking to states, be it engaging with exporters, be it engaging with buyers. This is going to be the big daddy in the department. And this function, as I was saying, actually almost didn't exist, 80% of it. So this is the big thing. Then on Brand India, we will be reinforcing that. Brand Equity Foundation has moved to the trade promotion body. So if somebody, all of you sit together, actually it's a jigsaw puzzle. Sherlock Holmes की तरह आपको तोड़ना पड़ेगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है. So that is why this presentation, to explain what that office order meant, because a lot of changes are happening. Similarly, manpower strength in missions to be increased. We are hoping to create a large number of posts in the missions, जिससे कि वो लोग हमें मदद कर सके. Next. Similarly, trade negotiations के लिए ये goods और agriculture और services से काम नहीं चलेगा. So we have created 9 separate divisions in the department, which will look at each subject in sustainable development. There's no way you can sign agreement with EU without having sustainable development. There's one on trade rules and other stuff. There's one on goods. There's one on services. There is one on investment protection. There is one on industry and GIs.
So a lot of these things are there. We will have to create. हर टीम में एक इकोनॉमिस्ट होगा, एक लॉयर है, एक ट्रेड सर्विस का अफसर है और एक सीनियर अफसर। मतलब 5 लोगों की टीम, 9 डिविजन्स, 45। तो डिपार्टमेंट की संख्या बढ़ेगी। अब नया विभाग आया है तो वी विल हैव एक्चुअली नीड मोर पीपल ऑल्सो। एंड DGFT will only now look at trade regulation and facilitation. Facilitation would mean all the schemes which they are running, ROTTEP, etc. And then we have made some changes in the reporting structures. I'll go to the next slide and you will see. I think we'll go to the next one. I've done this. If you see, this is the picture of the department. Okay. मेरे ऊपर मंत्री जी हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं और भूल गया उसको लिखना. But the other is below that. The dotted line है, this is the old Department of Commerce, but you will see there are new wings. There is a Trade Intelligence and Analytics wing. इसमें there will be a Trade Watchtower, which will analyze data, opportunity. अब जैसे यूक्रेन रशिया का लड़ाई हुआ, भाई हमारा क्या opportunity मिल रहा है उससे? श्रीलंका में economy डूब रहा है, क्या opportunity मिल रहा है? Somebody should be actually looking at that and scanning. That is the Trade Intelligence Analytics. दूसरा, DGCIS is no longer reporting to DGFT. DGCIS is reporting to the Additional Secretary in charge of Trade Intelligence and Analytics. It has been shifted. So this is going to be the data daddy of the department. And there we will have a trade watchtower, there will be trade information, data dissemination, and it will be, we are looking for people to actually run that place. 2 is trade policy. Trade policy has moved from DGFT to Commerce. So इस साल का जो FTP होगा, उसके ऊपर छाप Department of Commerce का होगा, not DGFT. For the first time since that policy started getting written. So I think that's a major change, and उसके अंदर भी are strengthening that. Trade negotiations, the तीसरा और चौथे जो boxes हैं, एक bilateral wing है, एक multilateral, and then within that we have one thing, territorial commodities and products, because जो हमें ministries के साथ वगैरह संपर्क करना है, उसके लिए we have got this commodities and products division. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आपको रहना पड़ता है. बॉटम लेफ्ट साइड जो 2 ब्राउन में लिखा है, दिस इज द ट्रेड प्रमोशन बॉडी. द डेटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज DGCIS, DGTR is a quasi judicial, and DGFT is roughly about 1/3 of what it is. It will only do trade regulation. आटा का खोलना है, बंद करना है, वीट का खोलना है, बंद करना है, ये तो 4 लोगों का काम है. यू डोंट नीड 1000 लोगों का दफ्तर फॉर दैट. दैट विल ऑल मूव टू ट्रेड प्रमोशन. नेक्स्ट, उसकी क्या अंदर डिटेल्स हैं. यू सी ग्लोबल ट्रेड प्रमोशन, आई फाइंड इट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. इट विल हैव मेनी विंग्स. देयर विल बी अ पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी विंग, देयर विल बी बायर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस विंग, देयर विल बी स्टेट इनिशिएटिव्स. इनके हर स्टेट में दफ्तर होंगे. बड़े स्टेट्स में 4-4-5, यूपी में है 5, महाराष्ट्र में 3 हो सकते हैं, गुजरात में 3 हो सकते हैं, बिहार में 4 हो सकते हैं, झारखंड में 2 हो सकते हैं. बिकॉज वहीं से तो यू हैव टू पुश स्टेट्स इनटू दिस. Branding, marketing and events. India Brand Equity Foundation. That's another interesting change. Currently our DGFT, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ उन्हीं का है, he is also the head of global trade promotion. I have shifted schemes from commerce to that wing. So market access उसी में चला गया है. Trade infrastructure tie scheme वहीं चला गया है. Future में एक district export hub scheme आएगा, ये भी वहीं रहेगा. This is going to be a major organization. And they will have a footprint abroad. There is something called digital initiatives. Digital initiatives में they will have a digital platform जिसमें exporters locate कर सकते हैं, भाई मेरे export के लिए ये markets में कुछ चीज़ें हैं करके. जैसा GEM है उसी का एक equivalent, but it is not for actually completing the financial transaction. It's more for information etc. That is that. And ये जो DGCIS जो right को दिख रहा है, they will be doing सर्विसेज डेटा एंड मर्चेंडाइज डेटा, बट उसकी एनालिसिस कॉमर्स में होगी, ऊपर टॉप में है लेफ्ट में ट्रेड इंटेलिजेंस एनालिटिक्स. बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हम कुछ कागज़ें आपको 10-11 वॉल्यूम अभी मंत्री जी रिलीज करेंगे. बिकॉज इफ ये दैट इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही विल बी रिलीजिंग इन द इवनिंग. इसी द होल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, देयर आर डिटेल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब. भाई आप मैंने हमारे दफ्तर में कोई भी अधिकारी घुसेगा या स्टाफ घुसेगा, उसके टेबल पे उसको मालूम होगा कि उसका काम क्या है, उसे क्या डिलीवर करना है. एंड एवरीबॉडी, SO, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, सबके टेबल में दीज आर व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू.
division wise. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह चला है चलो चाय पीते हैं उसके बाद पता लगाते हैं आज मेरा क्या काम है. Everybody. Two, if you are doing processes, you are doing trade negotiation, you have a checklist, you have to use this process. कई बार शिकायतें आती है, प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं हुआ है, गलतियाँ होती है, नहीं. Detailed, 70 plus SOPs have been developed. That is that. These are the designs, volume 3 to 11. हर विभाग का हर अलग अलग जो यहाँ का विंग बना है, उसकी डिटेल्ड डिजाइन है. मैंने लोएस्ट स्टाफ तक. A negotiation manual has been done. And just we have finalized, Balaji is not here, 11 से 15 सितंबर के बीच में पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम for all directors, deputy secretaries, about 80 of them, करीब 40 हमारे और 40 अन्य विभागों के, बिना ट्रेनिंग के कमरे में घुस जानी चाहिए, मैं नेगोशिएट कर रहा दूंगा. भगवान ने सृष्टि की है, but they have not endowed us with the entire knowledge in the world. We have to acquire knowledge. So there is a negotiation manual, everybody will be trained. And there are implementation roadmaps. And that volume 14 is a very critical one, trade promotion. We are hoping to get that body in place within the next month or so. With the Mantriji, we are headhunting. We are looking for somebody who has got the drive. तो अगले 2 साल में उसको खड़ा करना है. And I'll only end here. Next is a thank you. Basically saying that India is in a very good position right now. You may all be getting worried about global headwinds. A recession hai, demand may go down, etc. But there is one global trend and there is a micro trend. You have to match the two. Okay. In that, I think we are in a lucky situation. There is a huge movement of China. Yesterday, the chairman of FIO met me yesterday. First question, मेरा यहाँ कोई private वाला घुसता है. My first question is, how is your order book? The order book is good, he said. I said, कैसा रहेगा? He's from textiles background, sector-wise. He said, नहीं, textile. The other thing is, it's very nice to have targets to everybody. कमरे में बच्चे के होमवर्क की तरह घुसते हैं, सबसे पहले he knows question, target पे कैसा चल रहा है, सब अच्छा चलेगा. So he knows he's prepared. So I think textiles will manage. They have some worries about engineering goods and all he was telling me. We discussed it. But the point is the shift from China is huge. And I think this is the time for India to capitalize. 4-5 things have converged. Atmanirbhar Bharat and PLIs are creating manufacturing capacities. India is becoming globally competitive. When we had a meeting with the automobile people, I think it was last Thursday, just across, रात 4 घंटे बैठे और सारे हमारे ऑटो सेक्टर के दिग्गज बैठे हुए थे. मारुति was there, Tata Motors, Mahindra, सब थे. Everybody was very clear. Nobody can beat India in manufacturing. They were so confident. I mean, could you have heard our automobile sector saying this 30 years ago? If you move around 1984, they said shut down, shut down. So I think we are become competitive because of a whole range of things. Thanks to a lot of things like improving infrastructure, logistics improvement through Gati Shakti, and a lot of improvements in direct taxes, I think the economy is stronger to take advantage of the external. So this move out of China is going to be a big, big thing for us. And given that, I think this 2 trillion target is extremely doable. And you're free to ask the minister whatever questions you want to. I'm sure he'll be more than happy to answer. But the purpose of my thing was, without changing the department, you will not be able to. It's very simple. अंग्रेज जैसे देश को चलाए हम वैसे ही चलाते रहते, we wouldn't have reached where we are. Every generation has to make changes. Similarly, if you have to make the next leap, already we are talking of $500 billion. Okay, and I'm just looking at we keep monitoring data, etc. I am much more confident than what media writes about what our final export figures. If you look goods and services, 75th year, we will certainly cross 750 billion. I'm absolutely certain about it. So, but to go to 2 trillion, you need more capacities, and I think this entire effort is to do that. I will stop here. Let me see what the time is. I got about 5 minutes. It was a very tight day, but without briefing you first, I thought the Minister Saab presentation आपको समझ में फीका ना हो. I said let it make it continuous. Feel free. Any 3 questions or 4? Quick. Yeah. Sure. Yes. I'll come back. Sir, if you could give us a sense of how long, you're going in for such a massive restructuring exercise. How much time do you give yourself to reorganize and
go live with the changed architecture. Okay, that's good. Just can go back 4 slides where you have those 9 boxes. Okay, this is enough. Now, if you actually look at it, what we have done is, we didn't wait for the final report for somebody to tell us, okay, this is the perfect design. As they were processing and finishing parts of their work, we started changing. You get it? So if you actually look at it within commerce, I'm not talking about DGFT, the changes have happened. What we now need is more staff, deepening. You get the point. So there's a head for each of them. But if I look at trade intelligence and analytics, I need more data people. So we are in the market. I didn't tell you 1 or 2 other major changes. One is, a lot of private sector people are going to be in this. If I look at global trade promotion, at least 1/3 of global trade promotion is going to be private sector people. So that's why I said I'm in the market for headhunting good people, because there are certain skills which are not there. Now there's another thing within trade intelligence analytics, which is called a trade watchtower. Just before I came here, I have 10 different proposals from major research institutions to set up the trade watchtower for us. We'll outsource it. We have IEG, ICRIER, NCIR, IIFT, they've all bid. And then I'm actually evaluating their bids upstairs. Tomorrow evening, 5:30, इसी कमरे में, I'll ask all the directors to make presentations. So as we go along, we're doing it. Trade negotiations, bilateral, multilateral, it's already done. The big 3-4 things, if you ask us, which we need to do, setting up the trade promotion body. This is going to be big. We need to go to cabinet, get approval. Probably 15 days, 20 days. What we have done is, we have identified savings to show where we show savings to get additional monies. The other is changing the cadre structure for Indian Trade Service. We want to make it very large. We want to make it 1/3 UPSC, 1/3 deputation, 1/3 private. All our population in trade service.